my angels, welcome back to my obsession. This is Anamika here, and in today's video, you guys already know from the title itself, I'm going to talk about my pregnancy journey and even the delivery story. I wanted to combine this in one video. Why? Because I was really not well when I was pregnant, and I thought, okay, I'll do all of this once I'm well and I'm fine. And I even want to tell you guys that I did deliver my baby long ago, like it's been quite a while now, and I really wanted to film this video. So I asked you guys on Instagram, like many of you whoever follows me on Instagram will know that I have actually polled that what kind of video exactly you want to. Many of you actually said yes for a sit down chatty kind of video where you don't want to see any makeup or anything. It's just need to be a story time. So here I am with the story time, and I was really happy that many of you actually came up and gave me the idea of doing a story time, because makeup ke saath story I might have forgot many things because it's a long story, but I'll make sure that I'm narrating it really well and talking about the main points. So I know many of you are following me on Instagram, and you guys already know that I'm a proud mom of a baby girl, and her name is Sajda Ahmed, and her name was one of the first thing we actually decided after our marriage, like maybe hafta hua hoga, like 1 or 2 weeks, and we decided her name. Yes, we actually had a couple of names in our mind for the baby girl and one for a baby boy, just one particular name, but I'm not going to disclose that because I don't know if that is going to ever happen. But yeah, for the baby girl's name it is Sajda, and we even thought about the name Falak, which is from the Surah Falak. We thought about this name because it is one of the surahs and it's coming from Quran Sharif itself. And the second name we thought was Meher because it was a very sweet, cute kind of name, and I really wanted to give her a very cute, unique name. Farhan wanted a very meaningful name. I was looking for a cute name, so Meher was there in our head. And what is the meaning of Meher is like in Islamic wedding, when the groom is giving a amount of money or something, a jewelry or anything, to a girl that is called the bride, that is called the meher. So we actually wanted to keep her name Meher. It had a very good meaning, but still it was not like what we named her. That was Sajda, and Sajda came into our mind because once we got married, and I was very much religious pehle bhi and now also. So I actually wanted to learn how to offer namaz, how to do everything, because you know I was living in Dubai and I had the influence of a Muslim culture. So I really wanted to, you know, like dedicate my life and everything to Islam. So yes, the first thing what we did was I learned how to actually offer namaz, and whenever I used to go in sajda, I absolutely love, like I still love going in sajda. And me and Farhan decided, like it was his idea, okay, why not let us name our baby girl Sajda. Like if ever we are going to have a baby girl, we are definitely going to name her Sajda. So from there her name came. And yeah, now talking about the pregnancy story, I'm not going to actually talk about the dates when I got to know and all that thing. Like as you guys already know, it's been quite a while, and once I start uploading the videos, you'll actually come to know what's her age right now. So I'm not even disclosing it right in this video, but soon you'll get to know. Like I'm planning till Durga Puja, I'm actually finishing all the videos that I have. Like I don't vlog daily, but I do have very beautiful moments of her. Sometimes it was a normal day, and sometimes whenever we celebrated something, everything will go super soon. So yes, now talking about the pregnancy time, actually we were moving out from the first apartment where we were living.
it was that time, and I never knew that I already conceived, and it was unplanned, obviously. So what happened, I started packing and doing things, and I was like, is ghar ko chamka ke jana hai. So that's what I did. Like, I started cleaning, packing everything, so that everything is organized and I can get to film my videos अच्छे से regularly, and nothing is just misplaced and things like that. So I started packing everything in my supervision, and I did everything by myself, and I started falling a little bit sick, and even my cravings started. My first craving was like mango with lot of ice. I remember that the first day when I felt there was something going around with me and my body was like a day when I started craving for mangoes, and that too with ice, like literally baraf, kacha baraf. I blended that on the mixie and I had that. And I'm not a person who even drinks a lot of cold drinks or even cold water. So you can imagine like me drinking icy cold mango slush is a thing. So I had that, and even I was preparing to film a video, and I was taking few shots for the products which I actually got. So I started clicking pictures and even taking those shots. I felt that something is wrong. पूरी दुनिया घूम रही थी. So that was the first time जब like I felt dizzy. Yes, that was the first time, and I was like still okay about it. I thought maybe I am packing and I'm doing a lot of things. There is a lot of pressure. Maybe I am feeling like this, and गर्मियों का time था, so I thought like obviously mango. So I thought maybe because of that I'm even having this, but no. After a week when we shifted to a new house, I started feeling these symptoms, and that was bloating, dizziness. I always used to feel sleepy, and a very weird thing was a discomfort in my tummy. Like I thought gas हो रहा है, मुझे gas हो रहा है, मुझे gas कैसे हो सकता है? So I kept popping like some hajmolas, zira and all. I don't know what all I had, like cumin seeds and everything. I kept on munching on those, and my mom was like, stop it, what are you doing? Like, what are you doing? It's not bloating, you're not bloating. This discomfort, I think you should actually check it out. Something is there. So I called her my jethani, like my machli jethani, and I told her कि भाभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. I'm not understanding कि what is happening, and even I was late for my periods. So I was really confused that क्या हो रहा है. She told me कि आयत प्रेगनेंसी आ चुकी है. Like exactly this word, आयत प्रेगनेंसी आ चुकी है, तुम कल सुबह टेस्ट करो और आज तुम एक किट मंगवा के रखो so that early morning you can test it. So I was super excited, I was nervous, I was tensed, and so many emotions actually was flowing inside me. I can't even tell you guys. Like I feel so weird, like literally I'm still getting goosebumps right now. Okay, that feeling was so beautiful, plus I was like nervous, tensed, and so many. Like if you are pregnant right now and you just got to know, or maybe if you're trying out, you will definitely relate to me. So as it was unplanned, it was very weird for me to understand my symptoms, plus I was really scared plus excited, and like a lot of emotions were flowing in me. And I checked it early morning, like पूरी रात तो I could not sleep only. Like trust me, I was like आज तो मुझे नींद नहीं आने वाली है, भाभी ने क्या बता दिया. So what I did, I got the kit. Like I asked Farhan to get the kit at night, and then I checked it in the early morning, and 2 lines came, and I was so excited. I'm going to put the picture somewhere here. You can see this was the first picture of me knowing that my baby girl is coming. Like not baby girl, like my baby is coming.
And then the next thing happened in the morning, like I did collect the urine and gave it for a test. So when the report came, I got to know that I was 6 weeks 4 days pregnant, and I was super excited. Like 6 weeks was like wow. I was so happy कि at least चलो एक महीना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, and now whatever symptom is going to happen, it's going to last for only 8 months. That's what I thought. And then what happened? I just went with the flow, pregnant हूँ, अपने आप को आईने में देखना, all sorts of things, what people do it, and I was really excited. Plus I was very sick, like I was falling sick day by day. I don't know it was because of the shifting or what it was. बहुत ज़्यादा stress ले चुकी हूँ या क्या था, I never knew. But yeah, I was falling sick day by day. And जहाँ मेरा weight increase होना था, my weight came down, it decreased, and we went to the doctor, and doctor was like, Anamika, it's the pandemic time and this is not the right time for you to get pregnant. I was like, sir, ab to ho gaya, ab kya kare? And I know him from a very long time, like it's like a family kind of relation. And he was like, anyways, congratulations beta, God bless you, and be very careful because it's the COVID time and you have to be very careful regarding your pregnancy, and be very safe. So he told me that you will only have to come for the investigations for what's happening inside you, and even all the sonographies, all the tests. Otherwise, you don't have to come down to the hospital and meet me. You can actually WhatsApp me all your reports and everything. Talk to me, send all your reports and everything. I will talk to you pura time. And even if you are feeling anything, any discomfort, anything, you can just call me anytime and every time, and I'll be available to you. Like literally, he was there throughout and he did listen to me. Like I'll tell you. And then the next thing started was like I started my medications like the folic acid, and plus there was something else I was taking, I think the calcium one. Like both of these medicines, whenever I used to have it, after my lunch I always puked, after my breakfast I always puked, after my dinner I always puked, and I kept on vomiting all day long. ऐसा भी हुआ है कि I did puke on my mom's head, पूरा बालों से लेके face तक, literally, and that was so bad. Like I feel so bad about my mom. She was throughout the 9 months with me. She took a great care of me. Like कि किसी की भी माँ नहीं रखती है ऐसा care, ऐसा नहीं है, सबके माँएं रखते हैं, but my mom, she did wonders for me. Like she did everything for me, and I was so happy because she was there throughout my journey. Now one day I remember in my first trimester itself, I couldn't breathe. Like literally I was not able to breathe, and that happened, and I got so scared because my mom, she went out to some grocery shopping or something, and that too my brother was there, so both of them went, and Farhan was at work and I was alone at home. I don't know what happened. Suddenly I was short of breath, I couldn't breathe, I was not feeling good at all, and I started crying. I was panicking and I couldn't control myself from calling them and asking them कि अब भी घर आओ, because I think I'm gonna die. Like this thing happened, and we did not still understand. I was in a different level, and since then I started saying everything to my doctor बिना कुछ छुपाए. Now suddenly what happened, it was Bakrid, and that time I don't know, like somehow I catch cold, and वो ठंडा लगना was so bad. It was so bad कि like I couldn't smell anything, I couldn't taste anything, and I thought कि मुझे COVID हो गया है. Like literally I felt this, and my doctor said quarantine, and make sure that nobody is coming to you and you're not going anywhere.
quarantine karo. I'm seeing everything. I'm not here in Calcutta. I'll get back to you. Just make sure that you're not deteriorating and you're letting me know everything which is happening with you. And that was the time I got very scared, and I was very fortunate that it was not COVID, it was just the cold and cough, and the medicines which were given to me that actually took all the taste and the smell from me, and it was almost 15 to 16 days. Like, I could not taste and smell anything, but then I was totally fine. And then my first sonography to ho chuka tha. That has already happened. Just make chotu sa mark tha, nothing else. And I'm going to even include it here, so you can see this is the first picture of my sonography. And then I went sonography ka story. If you talk about my sonography ka story, bum, what happened there? Like, I went from home drinking lot of water, okay, like itna sara pani. Like, they told me that you have to have lot of water, but I even heard this कि आजकल machines इतनी अच्छी है कि you don't actually have to have lot of water. But I don't know what kind of machine where I was going they had, and that was just very close to my house. So, you know, without taking any risk, and बहुत सारा traveling नहीं होता because my hospital was very far, and I did not actually think of going there. And sir told me nearest on your local, जो तुमको समझ में आ रहा है, जो अच्छा है वहीं जाओ. So I had lot of water from home. I went there. एक बार try किया for the sonography. It didn't happen. They said कि पानी अभी भी कम है और पियो. I came out again, and then वापस एक bottle ले गए थे, almost a liter. I finished that. और फिर दोपहर का टाइम हो गया, everything got closed, and वहाँ पर एक filter रखा हुआ था, and I had water from there. And trust me, that water was so bad, so bad. Like, 2 घूंट लेने के बाद I vomited. Yes, I vomited. And उसके बाद, like, I could not have that water at all. जितनी बार I am drinking, उतनी बार I kept vomiting. So it was the very weird kind of a smell of some medicine, शायद for the minerals they do use. I don't know what kind of filter that was, but the taste was very bad, and I kept puking. 3 बार after puking, I finally went to the doctor, knocking the door, and I said, sir, like the person who was doing my sonography, I said, sir, मेरे से नहीं होगा, मैं कल आऊँ. He said fine. And he said fine, I'll reschedule your appointment for tomorrow, come tomorrow. So next day वापस ये हुआ कि मैंने फ़ोन किया अपने डॉक्टर को कि सर, मैं ना ऐसा क्यों, ऐसा हुआ है. So doctor is telling me, you don't have to have water only, have fruit juice, or maybe have लिमका पी लो, पानी में कुछ नींबू वाला पानी बना के पी लो. Like, you don't have to have water only, which is not tasting good and you're puking. So have something जो पानी हो, which is liquid, and plus even it will help you for the sonography. So I heard this and I was very happy. I had juice, pani, limca, everything I had, and I went there. Finally the sonography happened, and this is the picture where I have already shown you. So yeah, this was the first time. And uske baad to when I entered the second trimester, things were getting thoda sa better, but I couldn't have egg, chicken, and I could eat only fish. I had fish throughout my pregnancy. Like, throughout my pregnancy I had fish, I had sharifa, like the apple custard, and even I had orange and mossambi was my thing throughout my pregnancy. This 3 to 4 things I could eat, I could have it अच्छे से, and plus my cravings were for pizzas, for burgers, for KFC, for all the junks. And even, trust me, I am not a sweet tooth person. Like, I was not a sweet tooth person. मैंने इतनी मिठाई खाई है, like I can't tell you guys
कि मैंने कितनी मिठाई खाई है. So मैं second trimester में तो आ गई, but the only problem was I kept on vomiting and doctor was so kind and so good. Like I remember मैं उनको एक बार फ़ोन की around उस दिन 10:30 पौने 11 बजे. Like I had my dinner and I called him up कि सर सब उल्टी हो गया. दवाई जो मैंने खाया वो भी उल्टी हो गया, अब मैं क्या करूं? So sir was so good. He said कि अनामिका, you'll feel hungry again, so you have something, have अपना कुछ खा लो, खा के you again take your medicines and then go off to sleep. खाली पेट नहीं जाना है. And I was like, okay sir. The medicine was actually for vomiting. And vomit किया भी तो किया, it was the medicine for the vomiting. So can you guys even imagine? Like I complained sir कि sir मुझे बहुत ज़्यादा vomiting हो रही है, I cannot eat and like जो भी खा रही हूँ everything is coming out, बहुत तकलीफ हो रही है. So he gave me a medicine for the vomiting and I actually even vomited after having the same medicine. So मेरे डॉक्टर को मैंने जब भी कॉल किया, he was always available and he goes off to sleep by 10 and he wakes up early in the morning around 4ish 5ish. So ये हुआ था मेरे साथ situation कि I kept vomiting always. This did not only last for 4 or 5 months, it did last for till 7th month. Like सबसे पहले what used to happen, I used to eat, I used to vomit, I used to feel very very dizzy and the short of breath was a thing. And I even remember एक बार ऐसा हुआ, like during my second trimester itself, I think 6 months में थी मैं, me and my mom we went out, like society में ही we went and मुझे बहुत फुचका खाने का मन किया, दी गोलगप्पा बेसिकली. तो आई टोल्ड मॉम कि यहाँ पे ग्रोसरी में मिलता है, वी कैन मेक इट एट होम. तो हम लोग वो गोलगप्पे ले जाते हैं घर पे, आलू वगैरह सब कुछ बना के, इमली वाला पानी बना के, वी कैन हैव दैट. तो वो तो घर ही का है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. सो आई टुक इट, आई हैड, सब कुछ अच्छा था. व्हाट हैपन, मुझे लूज मोशन हो गया एंड आई अगेन कॉल्ड सर, सर मुझे लूज मोशन हो रहा है. सर ही अगेन गिव मी मेडिसिन्स फॉर दैट. आई हैड दैट मेडिसिन, आई प्यूक्ड. आई हैड दैट मेडिसिन, आई अगेन प्यूक्ड. आई हैड दैट मेडिसिन एंड फिर आई वेंट ऑफ टू स्लीप. सो ऐसे करते हुए ऑलवेज आई यूज टू हैव मेडिसिन, सब निकल आता था एंड देन आई अगेन यूज टू eat, again have medicines and ऐसे करके बहुत टाइम तक ऐसा ही चलता रहा मेरे लाइफ में. मैं प्यूक करती थी, खाती थी and it was so weird, it was so bad. like खाया, खाने में तकलीफ, इतना स्मेल सब चीज़ का, like everything was so bad, I couldn't eat. and जब भी जो चीज़ खाती थी ना ऐसा होता था. I remember जीत's birthday, it was तब तो शायद मैं 3 months की थी या 3 शुरू होने वाला था, ऐसा कुछ टाइम था. तो थोड़े पहले का बात कर रही हूँ. सो जीत का केक आया, इट वाज सो डिलीशियस एंड वी वर नॉट इन दैट हालत कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि मेरा तो वैसा हालत था नहीं, पैंडमिक टाइम भी था एंड मुझे बस केक खाना था. एंड दैट ऑल्सो इट वॉज अ चॉकलेट केक एंड आई लव चॉकलेट केक्स. खाते हुए खा तो लिया, फिर जो मुझे उल्टी हुई पूरा दिन, मैं जो खा रही हूँ खट्टा खट्टा उल्टी, खट्टा खट्टा उल्टी, खट्टा खट्टा उल्टी. बिकॉज वो केक खाने के बाद आई एक्चुअली फॉर्म्ड एसिड एंड इट हैपेंड. सो वट एवर आई एम हैविंग, आई एम जस्ट प्यूकिंग. सो दिस केप्ट ऑन गोइंग. But till then I did not actually understand that I was really not well. What happened, my weight did not increase till the 5 months. In fact, it did decrease when I conceived. I was 53 or 54 and my weight came down to 51 के आसपास, 50 to 51 के middle में. And doctor was like, this is not a good sign, so you have to have your food properly, you'll have to have proper food which is
like घर का खाना and even nutritious food. So if you have already watched my if you have seen what I eat in a day during my pregnancy, he told me eat everything and anything that you like except papaya and pineapple. Everybody knows that, and this is that two thing which is very much avoided during pregnancy, and even if you are planning to get pregnant, like make sure you're not having these two things because it can actually stop you from getting pregnant. Anyways, TMI. So yeah, I had everything. Like I remember I used to make mushroom, I used to have so many things. Like खाना बनाना तो मेरा बंद ही हो गया था. Like I remember from when I came to know till 6-7 months I could not cook and I did not even go inside the kitchen. Like मुझे एकदम मन नहीं करता था. Whenever I went, I used to smell anything and I puked. I remember even like मेरे पड़ोस के घर में जब खाना बनता था, they used to make fish. I couldn't take that smell. Like apart from that, मुझे खाने में तो fish problem नहीं होता था, but मैं smell नहीं ले पाती थी. Other than that, I couldn't eat chicken till my second trimester, and then I started having, and that too बहुत हल्का मसाले वाला, whatever mom used to cook, I used to enjoy that. And egg also, I could have only omelette. I couldn't have poach, the sunny side up, and even the boiled eggs I couldn't have it because बहुत smell लगता था and I always used to puke. So this was my food wala story. Now what happened, I was in the second trimester and one day I figured it out कि मुझे बहुत constipation हो रहा है, and oh my god, that day I actually felt what is hell. Like literally इतनी तकलीफ हुई, इतनी हुई I couldn't, like I can't even tell you guys. But yeah, the constipation was massive that day. Like every day it was like normal, but that day it was very very weird. And ये एक problem मुझे हुआ, and doctor suggested that you'll have to use the capsules. Yes, वो वाली capsules. And I was so scared. ऐसा पहले कभी नहीं किया है. What is this? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों करूँ? I called up doctor and I told him, sir, मैं ये नहीं कर सकती. He's like, एक काम करो, come down to the hospital. We'll help you. Oh my God! इससे पहले जब मेरा first sonography के time पे I told doctor, I can't have ऐसा type का. It's very problematic. Like इतना पानी पी के. He said there are different more ways of sonography. Why don't you come down to the hospital? We can do it vaginal. And I was like, no, I am going. I'm drinking water. Like literally, I remember just because doctor के साथ इतना अच्छा relation है, he always treated me like a little girl. And कुछ चीज़ों में ऐसा होता था. He really used to scare me at that moment. और मुझे ये दिमाग में बहुत काम करता था. Okay, like I used to get scared and I used to do the simple thing which I laugh regarding अभी. Like I always feel like कि यार मैं कैसी थी, मैं क्या थी. And trust me, I'm that person who is so much scared with needles. Like I can't see myself getting injections and I can't see Sajda getting vaccinated. Like अभी तक till date उसके किसी भी वैक्सीन में मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसको अपने गोदी में रखूं या फिर उसको पकड़ूं या फिर मैं उसका वीडियो बनाऊं. I cannot. Like whenever we go for vaccinations, now it is always Farhan. Till 3 months it was mom and Farhan both. They used to go and मुझे तो जाना ही था because I am the mother. And ये हमेशा हुआ है कि I can't see her. As soon as she'll start getting vaccinated, I start crying. So needles से मुझे बहुत डर लगता था. And every time I got an injection during my pregnancy and after my pregnancy, yes, I'll even tell you what happened. तो मैं बहुत डरी थी. So ये एक चीज़ हुआ. तो ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें हुई in all the 3 trimesters. I even remember कि
एकदम ही सीजन नहीं है फॉर वाटरमेलन. आई स्टार्टेड क्राइंग, लिटरली आई वाज सॉबिंग कि मुझे वाटरमेलन चाहिए, मुझे नहीं पता कहाँ से चाहिए. एंड दैट टू आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर शुरू होने वाला था. So my mom and I found one and we got that. I had, and उसके बाद ना मेरी craving खत्म हुई. Like literally I had the craving of having Bisleri water. And that is so weird. किसी को भी बोलती हूँ ना कि मेरा ये craving था, everybody laughs कि मुझे Bisleri का पानी पीने का मन किया. And that too दुबई का. एंड नॉट ओनली बिस्लरी, देर इज़ वन मोर विच इज़ दी ओएसिस, इट्स देयर इन दुबई. मुझे उसका भी क्रेविंग हुआ था, बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वो मुझे यहाँ मिलने नहीं वाला था. तो हाँ, ऐसे टाइप के बहुत मेरे क्रेविंग्स हुए हैं. बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी खाई है. नाउ टॉकिंग अबाउट दी डिलीवरी, अब क्या हुआ, मेरा गोद भराई हो गया एंड एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, बट स्टिल आई वाज नॉट वेल. अब मेरा वेट भी इंक्रीज होने लगा है एंड इतना ज़्यादा हो गया है धड़ से. 61 से मैं 62 कब पहुंच गई मुझे पता नहीं चला. मैं 75 कब पहुंच गई मुझे पता नहीं चला. एंड दैट्स हाउ मेरा वेट इंक्रीज होता रहा. एंड ठीक है, इट वॉज ऑल फाइन. एंड मैं डॉक्टर को सिर्फ 3 या 4 बार विजिट की थी, बिकॉज दैट वाज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिम. सारा जो भी डबल मार्कर, जो भी जैसे भी टेस्ट वगैरह होते हैं, एनिमोली सब होता रहा. आई केप्ट सेंडिंग हिम एवरीथिंग वाज फाइन. एंड मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्चुअली मुझे पता चला दैट आई एम अ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप. माई डैड एंड माई ब्रदर इज़ ऑल्सो ओ नेगेटिव. मेरी मॉम का ओ पॉजिटिव है. And Farhan, he used to know that he was B positive, but doctor said like आपके मुंह की बात तो मैं नहीं सुनने वाला हूँ, you have to get your test done. Like Farhan is O positive and I'm O negative, तो everything was fine. तो कॉम्ब टेस्ट एक था, वो सब हुआ. लाइक बहुत सारे टेस्ट जो नेसेसरी थे वो सब हुआ. एंड आई गॉट टू नो कि एवरीथिंग इज़ फाइन. वी वेर वेरी हैप्पी दैट देर वॉज नो प्रॉब्लम विद द बेबी. द ग्रोथ वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज फाइन. नाउ द डे केम when we shot for the maternity shoot, which was my previous video. If you have already watched that, and if you haven't, I'll link it, you can watch that. So वो वाले वीडियो में लाइक वो वाला जिस दिन हम लोग शूट किए, वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock. आई नेवर यूज टू गेट अप एट अर्ली बिकॉज सोते सोते बहुत रात हो जाती थी, बिकॉज मुझे नींद नहीं आती थी. एंड आई यूज टू कीप like going to the washroom. I used to pee a lot. Like it's the story of every mother whoever is pregnant. उस दिन we got up early. बहुत ही अच्छा वेदर भी था. Everything was so good. Only Jeet did not sleep because वो बहुत लेट तक जागता है. लाइक 3:30 4 5ish तक वो जागता है. तो ही सेड कि मैं सोऊंगा ही नहीं, मैं शूट करके फिर ख़त्म करके आई विल स्लीप. सो जीत एक्चुअली फिल्म दी वीडियो फॉर अस एंड हमारे सोसाइटी के अंदर ही हुआ है ये शूट. सो या इफ़ यू हैवेंट येट वॉच्ड, ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैटरनिटी शूट था. सो यू कैन वॉच इट एंड गेट बैक टू मी इफ़ यू एन्जॉयड दैट वीडियो. इसमें नहीं बोलना, उसी में बोलना, पर इसको पूरा ख़त्म करके देख के पूरा फिर ही जाना. So yeah, उसके बाद what happened when the day we shot, I came back home. As I remember on the vlog I said कि I'm going to sit down to edit this vlog, but नहीं, that did not happen. I अचानक से felt very dizzy and बहुत तबीयत ख़राब लग रही थी. तो I went off to sleep around 9:30 after taking off my makeup and everything. I went off to sleep. अच्छे से सोई मैं and I got up very excited because मुझे उस वीडियो को एडिट करना था. एंड इट वॉज 17th of February. Yes, I'm not wrong. It was 17th of February. And soon I'll definitely tell you when my baby was born. So उस दिन ऐसा हुआ कि I was so excited. I sat down इसी टेबल पे. I sat down with my laptop and I started editing the video. And पूरा time when I was actually editing, मेरा पैर लटक रहा था. Like the way we sit on the chair, the leg was not actually resting, it was just on the floor. And उससे क्या हुआ, water retention मेरे body में बहुत ज़्यादा बढ़ गया. And
that actually affected my health a lot. And I was almost 1.5 month due. मुझे March 26 का डेट दिया गया था for my due date, but it was 17th of February, so हाँ 1.5 महीना almost. तो so you can calculate. So ऐसा टाइम था. एंड उसके बाद ये हुआ कि उस दिन मेरी तबीयत बहुत अजीब सी लग रही थी. मैं एडिट कर रही हूँ, मैं लेट जा रही हूँ, मैं एडिट कर रही हूँ, मैं लेट जा रही हूँ, और मैं बैठे बैठे बेड पे एडिट नहीं कर पाती थी बिकॉज पेट बढ़ गया था. एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लाइक एडिट ऑन दी बेड कीपिंग दी लैपटॉप. एंड उससे मुझे पेट में बहुत तकलीफ होती थी. आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी डिस्कम्फर्ट. सो आई सैट डाउन एंड वहीं पर एडिट करने लगी. आई kept on getting up from the chair and lying down on the bed, but that did not really help क्योंकि मेरी तबीयत already ख़राब हो चुकी थी. From the early morning I got up, रात को भी I could not sleep because the whole scenario that we have filmed for the maternity shoot was totally my vision. Like I kept on thinking कि हाँ इस टाइम पे ऐसा होगा, इस टाइम पे फरहान मुझे ऐसे घुमाएंगे, इस टाइम पे हम लोग ऐसे चलते हुए हाथ पकड़ेंगे. लाइक इफ़ यू वॉच द वीडियो यू विल कम टू नो what exactly I am talking about. Only the unexpected thing happened was the pigeon wala moment. Other than that, everything was scripted by me in my head. Like it was not like written on the notebook or anything, but it was there in my head कि मुझे कब कब क्या क्या shoot करना है. And even I knew it that what will be the outfit, what will be the location. So बहुत सारा चीज़ रात को सोचा, सही से नहीं सोई. आई kept on getting up and then the shoot early morning. After coming जितना भी रेस्ट हो, रात का sleep is always रात का sleep. अब क्या हुआ उस दिन, I felt that something is wrong with my body, but I did not understand what was wrong with my body. So मैंने मम्मी को बोला कि मुझे बड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आई वॉन्ट टू गो टू द हॉस्पिटल. लिटरली मैं एक छोटे बच्चे की तरह टू फरहान, टू माई ब्रदर एंड टू मॉम, आई केप्ट ऑन सेइंग मुझे हॉस्पिटल ले चलो, प्लीज़ हॉस्पिटल ले चलो. एग्जैक्टली लाइक दिस, क्योंकि आई एक्चुअली वॉज फीलिंग वेरी इमोशनल एंड पता नहीं क्या था. इट वॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गो एंड गेट माई सेल्फ चेक्ड कि क्या हो रहा है एंड ऑल दैट. बट दे वर लाइक अच्छा ठीक है, ये ऐसे ही नॉर्मली बोल रही है, नॉर्मली बोल रही है, नॉर्मली बोल रही है. तो वी केप्ट ऑन डिलेइंग दिस. ठीक है. एंड नाउ वन डे आई कॉल्ड माई डॉक्टर एंड शायद मेरा कोई लास्ट टेस्ट था जिसके रिपोर्ट्स आने थे. एंड आफ्टर आई रिसीव्ड ऑल द रिपोर्ट्स आई हैव सेंड हिम ऑल द पिक्चर्स एंड डॉक्टर इज़ लाइक वेयर इज़ योर इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट. आई एम नॉट सीइंग इट एनीवेयर. मैंने कहा सर आई थिंक वो प्रेस्क्रिप्शन में नहीं था, आई विल गेट इट डन, आई विल गेट इट डन बोलने के बाद लाइक आई केप्ट ऑन डिलेइंग इट फॉर सम रीज़न. आई थिंक कुछ ब्रांड कोलैबोरेशंस भी चल रहे थे. एट दी एंड एकदम लास्ट मोमेंट पे मुझे बहुत सारा वीडियोस फिल्म करना था. प्लस इवन आई वॉज नॉट कीपिंग दैट वेल कि अभी ट्रैवल करूँ जाऊँ. एंड इकोकार्डियोग्राफी जहाँ पर मैं जा रही थी वहाँ पर नहीं हो रहा था. सो आई केप्ट डिलेइंग दैट. एंड डॉक्टर को जिस दिन मैंने कॉल किया, इट वॉज 5th of March when I called my doctor and he was like yes Anamika tell me, अभी तो टाइम है, आई होप यू आर enjoying the last days of your pregnancy because he said कि we will try for a normal delivery, आपके रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट है. So we were actually thinking कि यही होने वाला है. And then I told him कि sir there is a problem, one of my leg is very much swollen and मुझे समझ में नहीं आ रहा what's the problem. It is very weird and I'm feeling some sort of discomfort. tight है पूरा मेरा कफ के मसल्स एंड मुझे बहुत ज़्यादा कमर में और पैर में दर्द हो रहा है. He was silent for a moment and he said come down to the hospital tomorrow itself. So it was 6th of March जब हम लोग गए हॉस्पिटल में. He checked and he said कि हम लोग अब इसको लेके डिले नहीं करने वाले हैं, we have to get her operated, otherwise बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, आप लोग मुझे पहले क्यों नहीं कॉल किए.
what was this? In fact, my house help, she even noticed कि भाभी आपका पैर सूजा हुआ है. I was like, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या ही बोल रही हो. She is like, हाँ है. And I think 2 दिन के लिए, like for 2 days my mom was not there at home. Like उसी टाइम पे like we got a new house, like my mom she bought a new house. So बहुत सारा इधर उधर का चल रहा था एंड एंड मोमेंट भी था, प्लस बहुत ही सारा चीज़ें था जिसके वजह से माई मॉम शी केप्ट ऑन गोइंग एंड कमिंग. तो इट वॉज आफ्टरनून व्हेन शी सेड दैट दी हाउस हेल्प एंड आई सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमको शायद लग रहा होगा कि आगे पीछे देख रही हो ना पैर. शी सेड नहीं यू टॉक टू योर डॉक्टर. So when my mom she came, she also saw the same thing. I think I have few pictures of that day. तो मैंने वो भी डॉक्टर को भेजा था. तो या 6th को हम गए एंड डॉक्टर एडमिटेड मी एंड ही सेड कि कोविड टेस्ट होना है, कोविड टेस्ट के बाद ही हम आपका कर पाएंगे. मैंने कहा सर कोविड है ही नहीं, क्यों टेस्ट कर रहे हो, इट्स सो इरिटेटिंग. ही इज़ लाइक नहीं यू हैव टू गो थ्रू दिस बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मेलिटीज़, दिस इज़ द hospital formalities for every hospital all over the world. You have to get this done. So he did that. मुझे पूरा isolated जगह पे रखा गया for the whole day till my reports came. Obviously I had to come negative. It came negative and मुझे मेरे ward पे shift कर दिया गया at night. मुझे तो नींद आ ही नहीं रही थी, ऊपर से I gave my phone to फरहान के फ़ोन में चार्ज नहीं है, आप ले जाओ, क्योंकि लाइक चार्ज अगर कर ही नहीं पाऊँगी तो क्या ही होगा. एंड मैं इवन आई डिड नॉट आस्क फॉर द चार्जर. आई कुड हैव चार्ज इट इन द हॉस्पिटल बट या आई डिड नॉट. सो इसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने अपना फ़ोन दे दिया एंड फ़ोन देने के बाद तो इट वाज नॉर्मल. रात को जब मुझे शिफ्ट कर दिया गया आई स्लेप्ट थोड़ा सा एंड वापस मुझे पैर में दर्द हो रहा था. तो आई वाज अप फ्रॉम 4:30 to 5 मॉर्निंग से मैं उठी हुई थी एंड आई कॉल्ड दी नर्स. शी गेव मी अ लिटिल बिट ऑफ वॉलनी. तो लाइक उसके बाद आई वाज वेटिंग कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, माई बेबी इज़ गोइंग टू कम, आई एम गोइंग टू मीट, आई डोंट नो इट्स अ गर्ल और बॉय. तो गर्ल और बॉय को लेके बहुत सारा कुछ हुआ है, आई टेल यू दैट अगेन. सो उसके बाद क्या हुआ, लाइक द हॉस्पिटल आई वाज इन दे वर रियली गुड एंड बहुत ही अच्छा बिहेवियर था सबका. इट वाज वेरी नाइस. आई absolutely enjoy staying there for 3 to 4 days. एंड हाँ उसके बाद तो मुझे मॉर्निंग में लेके गए ओटी एंड मुझे रेडी कर रहे. द ड्रेस दे मेक अस वेयर, लाइक ऑब्वियसली इट इज़ सो बैड. वो पूरे पीछे से सब कुछ दिखता है एंड मैं ना ऐसे करके पकड़ी हुई हूँ पीछे से और सामने से, एंड आई एम लाइक सब कुछ तो दिख रहा है, कितना ख़राब लग रहा है. तो दे आर लाइक सुनो तुम ऐसे बैठ के तो नहीं जाओगी, तुमको स्ट्रेचर पे लेके जाया जाएगा, तो डोंट फील शाय, कुछ नहीं होगा तुम्हारे ऊपर से एक चादर रहेगा. आफ्टर द ऑपरेशन यू विल गेट दिस, हम लोग इसको हटा देंगे और यू विल गेट समथिंग एल्स टू वेयर. इट्स अ वेरी वियर्ड ड्रेस. जो भी फिर ऑपरेशन थिएटर जब मुझे लेके जा रहे थे तो ऊपर के फ्लोर में था एंड लिफ्ट से जब गई द डोर ओपनड एंड आई सॉ ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स. लाइक मेरी मम्मी थी, मेरा भाई था, फरहान वॉज देयर, मेरे मछली जेठ जी थे एंड आई थिंक मेरी नंद उस टाइम आई नहीं थी एंड बहुत सारे और भी बहुत रिलेटिव्स जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो लोग भी आए थे बाद में. बट बहुत सारे लोग हैं आए थे तो मैंने सबको तो देखा नहीं एंड फरहान जस्ट केम अंदर. डोर जब खुला ही वॉज ओनली अलाउड टू एंटर एंड ही इज़ लाइक बेटी होगी एंड हमारी छोटी सी बेबी होगी, तुम जल्दी जल्दी से आ जाओगी बाहर, ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक, यू आर अ स्ट्रॉन्ग लेडी एंड अच्छे से जाओ. सो आई वाज लाइक हाँ बाबा ठीक है आई एम गोइंग. एंड जब मुझे अंदर लेके गए तो मुझे मास्क पहनाया, दे मेड मी वेयर दी कैप एंड एकदम छोटू सा पतला सा बेड. आई वाज फीलिंग सो स्केर्ड कि मैं गिर गई तो क्या हो गया ये वो. तो दे डिड कवर मी, ऊपर से कुछ समथिंग वाज देयर एंड माय डॉक्टर ऑलरेडी सेड तुमको लोकल एनेस्थेसिया नहीं देंगे, वी विल एक्चुअली गिव यू द फुल जिसमें यू विल बी अनकॉन्शियस. सो दैट ही ऑलरेडी टोल्ड मी. एंड इवन जो इकोकार्डियोग्राफी का था ना, लाइक द सेम डे व्हेन आई गॉट माय कोविड टेस्ट, द डे आई गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, मेरा इकोकार्डियोग्राफी भी
मेरे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में ही करवाया एंड the doctor who was doing my echocardiography, the heart doctor, he actually scared me a lot. He kept on asking me, आप दवाई लेते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई हिस्ट्री है, एंड आई एब्सोल्युटली गॉट स्केर्ड बिकॉज ऑब्वियसली एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से लाइक लिसनिंग टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट रियली मेड मी फील स्केर्ड. ये सारी चीज़ें भी हुई, बट हाँ, माई डॉक्टर ही वॉज सो गुड एंड ही मेड श्योर दैट आई एम कम्फर्टेबल. तो मेरे मास्क के अंदर कुछ डाल दिया, ठंडा ठंडा कुछ मुझे फील हो रहा था, मुझे ना बड़ा ही अजीब सा इची फील हो रहा था नाक में, एंड आई न्यू इट कि गिविंग मी द एनेस्थेसिया. एंड व्हाट हैपेंड, मैं अनकॉन्शियस हो गई थोड़ी देर में. एंड आफ्टर आई गॉट माई कॉन्शियसनेस बैक, लाइक व्हेन आई वाज गेटिंग माई कॉन्शियसनेस बैक, आई रिमेंबर एक छोटी सी बेबी का प्यारा प्यारा साउंड सुनाई दे रहा है मुझे. एंड द डॉक्टर वाज लाइक, आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग वाज सो ब्लर, माई आईज वेर क्लोज्ड and वो बड़ा वाला light on my face, it was just there, and like literally when I am closing my eyes I can feel that thing from this ring light. So yeah, that was the scenario, and he is saying, congratulations Anamika, you are blessed with a baby girl. And I can't tell you how happy I was. और मेरे ना ये कान में जैसे गूंज रहा था कि ओ माई गॉड, दिस इज सो गुड. एंड आई एंड फरहान वी ऑलवेज विश्ड कि हम लोग की बेबी गर्ल हो. एंड व्हेन द डॉक्टर सेड कि उसको दिखा दो बेबी को, सो बेबी को जब लेके आए, आई फर्स्टली वांटेड टू सी उसके लिप्स कैसे हैं. उसके लिप्स मेरी तरह पतले तो नहीं है, उसके लिप्स उसके पापा पे तो गए हैं. एंड एज सुन एज आई सॉ हर, आई जस्ट फेल इन लव. आई रिमेंबर आई टच्ड हर विथ माई, जैसे ये उसका सर है, आई टच्ड माई फिंगर ऑन हर like forehead, and I said, oh my baby, I love you. And I remember that instantly I fell in love with her, and right now she is crying. I can hear it. I again got unconscious, मुझे नींद आने लगी, and they did transfer me to my room, to my bed. And obviously the operation, the medicines and everything, and the pain was so massive, like बहुत पेन हो रहा था मुझे. मेरे बैक में पेन हो रहा था, पेट में पेन हो रहा था, पैर में पेन हो रहा था, कहाँ कहाँ पेन हो रहा था, आई हैड नो आइडिया. बहुत पेन हो रहा था, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग एंड आई स्लेप्ट. एंड व्हेन आई जस्ट गॉट अप, सबसे पहले मैंने अपनी बड़ी भाभी को देखा, लाइक फरहान्स बड़ी भाभी, एंड शी वाज लुकिंग सो प्रिटी. लाइक मैं अभी भी सबको कहती हूँ, शी वाज लाइक एक आँख खोलते ही जो एक इंसान देखता है ना खूबसूरत सी चीज़, she was that. And I saw her, and she was wearing a beautiful white dress with red and blue, कुछ काम था उसमें. I remember मेरा बहुत धुंधला आँख था उस टाइम. मैं बस आँख खोली एंड भाभी खड़ी है with a smile, and she is always having a smiling face. तो उनको देख के I was like, oh my god, felt so good, I can't even tell you. तो उस टाइम पे मेरी आँख खुली, फिर मेरी नंद आई थोड़ी देर बाद. उस टाइम मेरी आँख खुली, आपी आई, मिली, दूर से देखा मुझे, बेबी को देखा, और फिर शी वेंट. वापस मैं सो गई. वापस जरीन भाभी केम, लाइक ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर. शी केम एंड शी इज़ लाइक, आयत कॉन्ग्रेचुलेशंस. पता है मेरी बेटी भी आना चाह रही थी, बट हॉस्पिटल वालों ने अलाउ नहीं किया, एंड हम लोग बाहर से आए हैं, बेबी तुम्हारे बाजू में ही है, देखा है तुमने उसको. मैंने कहा हाँ भाभी, शी इज सो प्रिटी. एंड एवरीबडी केप्ट सेइंग कि शी लुक्स एग्जैक्टली लाइक फरहान. आई ऑल्सो टोटली रिलेट. व्हेन शी वाज बोर्न शी लुक्ड एग्जैक्टली लाइक फरहान. एंड उसका ना ये ऐसे आईब्राउज लाइक भाव से कोड़ने वाला एक चीज़ है, दैट शी गॉट इट फ्रॉम माई मॉम. तो द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी राइट हियर, वो वैसी की हुई थी, एंड शी लुक्ड सो क्यूट. एंड वो बिल्कुल छोटू सी थी, एकदम इतनी सी छोटू सी थी, लाइक लिटरली अ लिटिल चुईया, एकदम चुईया. आई केप्ट कॉलिंग हर चुईया. एंड आई रिमेंबर द होल 3 days आई वाज इन द हॉस्पिटल, आई केप्ट लुकिंग एट हर. आई couldn't take my eyes off her
I was so much in love with my little baby girl. अगर किसी ने अगर कहा है ना कि there is love at first sight, it happened to me 2 times. First it was with her father and second time it was with her. And I fell in love so hard with both of them. Like I can't even tell you. Like Sajda ka to I can't even tell you guys कि how much I was in love with her. Like literally I remember the second day I asked the nurse कि please मुझे वॉलनी दे दो, मुझे वॉलनी लगाना है, क्योंकि I kept seeing her like this. वो मेरे बाजू में थी and तकिए पे सर रख के I kept seeing her day night पूरा टाइम. I did not even sleep at night. मैं उसको देखती थी, उसको पूरा स्वाडल किया हुआ रहता था and I used to feel she must be feeling hot. It's so like hot. March 7th she was born and it was hot. Obviously it had to be hot. And I was like, यार गरम है, गरम है, गरम है. The AC was on, but still I thought कि इतना स्वाडल किया हुआ है उसको, she must be feeling hot. So I kept on like थोड़ा सा उसको लूज़ कर देती थी. जितना बार उसको स्वाडल करके देकर जाते थे उतनी बार मैं उसको पकड़ के लूज़ करती थी. तो this was the thing. And after few hours I came to know due to my water retention मेरे blood भी clot होने शुरू हुए थे. And that was very bad thing which happened to me. So for that blood thinner के लिए I kept on getting injections every day, twice in the morning and even in the evening. Like hospital में 3 दिन उन्होंने मुझे injection दिया day and night. And even after coming back home पेट में मुझे injection लगता था. Like जैसे this is the navel area, यहाँ पे लगता था, यहाँ पे लगता था, यहाँ पे लगता था, यहाँ पे लगता था. Every day ऐसे लगता था and it was so painful. I can't even tell you. And ऐसे करके 3 दिन तो गुजार लिए. I immediately when I got up from the bed I could not stand. मुझे बहुत तकलीफ होती थी. ऐसा लगता था I can't move, I can't walk. एक तो operation and ऊपर से my legs were swollen bad, very bad. It was like very heavy. Anyways my lower portion is heavy, but my legs were so swollen, my body was so swollen, my lips were so swollen. I looked at myself in the mirror and I said, it's not me. This can't be me. Like me, itni dubli patli ladki, how come I have become this? Like when I got pregnant I was 53 and when I delivered I was 82. I was 82 kilos, yes, and I was super scared seeing myself कि how did this thing happen. And lot of problem happened after even coming back to home. Like मुझे 3 दिन में discharge मिल गया because everything was fine. So I came back home and first thing I did was I actually trimmed my eyebrows. I shaped them and I did my skincare and I said I want to look best, I want to look better. I don't want any postpartum depression or anything to hit me because I knew this was going to happen. Why? Because before my pregnancy happened, I was actually in grief of my father's and my Mausaji's death. And as soon as I got pregnant, वो सारी चीज़ें तो मेरे दिमाग से हट गई. I looked beautiful, my hair became beautiful, everything was so nice and everything was such a happy time throughout the 8 months. Like exactly on the 9th month, जिस दिन मेरा 9th month हुआ 37th weeks, my daughter was born. So I did not complete the total 9 months. Like my baby was fully mature, but it was on the 37th week. Now after coming back home, जब हम लोग घर पे enter किए, I saw the whole house was beautifully decorated with balloons, pink and white. And सबसे खराब चीज़ क्या हुआ, I was not vlogging, my husband did not plan for vlogging, my mom did not, my masi did not, my brother did not, and मेरे in-laws, they were not coming to my place because of COVID. Like because of COVID no one actually came from the hospital. जो लोग आके मिल के चले गए
उसके बाद कोई एक्चुअली घर नहीं आया, क्योंकि इवन डॉक्टर सेड कि अभी किसी को अलाउ नहीं करना बिकॉज योर बेबी इज़ जस्ट बॉर्न एंड शी माइट गेट इन्फेक्टेड. सो अभी कोई किसी का एंट्री नहीं होने वाला है. ओनली पीपल हु आर देयर एट योर होम कैन बी देयर. सो जब घर आई, मुझे हमेशा से किसी की ज़रूरत होती थी कि कोई मुझे उठाए, कोई मुझे लिटाए, क्योंकि इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गेट अप एंड इवन आई कुडेंट लाई डाउन बाय माई सेल्फ. मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी. एक तो मेरा पैर बहुत भारी था, उसके ऊपर से मेरे पेट का कट बहुत ही ज़्यादा पेन देता था मुझे. एंड आई हैड अ pasting. It was not a stitch, like 7 layers तो है, it was stitched. The last layer was a pasting, but it was very difficult for me to even move. Like 2 months I remember I was bedridden and I couldn't get up by myself. I always needed my mom or my brothers or my husband's help. And ऐसे करके ये होते हुए मेरी मम्मी ने डिसाइड किया, व्हेन आई कंप्लीटेड माई 1 month, माई मदर इन लॉ, माई बड़ी भाभी एंड वन ऑफ माई ननद, they all visited to my place. And उससे पहले मेरे मजले जेठ और जेठानी आई थी with their little baby girl to meet me and Sajda. They got so beautiful gifts, but unfortunately उस time I was not vlogging. I was not in that position that I could do anything. तो मेरे पास एक्चुअली कुछ नहीं है. आई थिंक बहुत ही कम वीडियोस भी होंगे मेरे पास सजदा का, प्लस बहुत ही कम मेरे पास व्लॉग्स. लाइक उस टाइम तो आई डिड नॉट व्लॉग. व्हेन शी टर्न्ड 2 month, व्हेन आई वाज फाइन, आई स्टार्टेड व्लॉगिंग. तो नेक्स्ट व्लॉग आपको वही वाला दिखने को मिलेगा, एंड दैट वाज ईद. So yeah, it was 2021, 7th of March my daughter was born. And वही कोई vlog नहीं, कुछ नहीं. So I have few clips you can see after coming home. This was the bed she had and the balloons. It was very beautifully decorated, but मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी बेड से, और जीत या कोई किया भी नहीं. एंड मेरे कैमरा का बैटरी भी चार्ज नहीं था फ्रॉम दी मैटरनिटी शूट. एंड लाइक करना चाहते थे तो बहुत कुछ कर पाते, बट कुछ हुआ नहीं बिकॉज एवरीबडी वॉज वेरी लेजी एंड वेरी बिजी विद द लिटिल वन. सो सजदा का सबसे पहला नाम उसके मामू ने दिया है, विच वॉज निक्की, एंड वी लव इट. एकदम छोटू सी निक्की सी थी, तो इसीलिए उसके मामू ने उसका नाम निक्की रखा था. एंड तो उसके बाद ऐसा हुआ कि 2 months तक तो जब मैं घर पे थी, मम्मी के यहाँ चली गई. लाइक आफ्टर अ मंथ अपने घर से जब सब मिलने आए थे, मिलने के बाद सब जब चले गए, मैं मम्मी के साथ घर चली गई. घर जाने के बाद वहाँ पर मैं रही कुछ टाइम तक, एंड देन आई अगेन केम बैक. एंड सिंस देन एक्चुअली आई स्टार्टेड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग सजदा, बिकॉज उससे पहले उसको जो भी दूध पिला रहे थे, शी वॉज गेटिंग एक्सट्रीमली कॉन्स्टिपेटेड. डॉक्टर्स लाइक जो भी हम लोगों ने मम्मी के उस तरफ दिखाया, दे ऑल एक्चुअली मिसगाइडेड मी. किसी ने मुझे कहा उसको पानी पिला दो. आई इवन हैव अ क्लिप ऑफ पानी पिलाने का. लाइक 1 month की भी नहीं हुई मेरी छोटी सी बच्ची, शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर विथ अ स्पून, यू कैन सी राइट हियर. एंड हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए. आफ्टर visiting 6 doctors, I came back to my home, and then the doctor, she actually sat down with me. She took 1 hour and पूरा मेरा काउंसलिंग की कि you are the mother, you are having milk production, you can feed your baby. तुमको लग रहा है कि उसका पेट नहीं भर रहा है, तुमको कैसे लग रहा है कि उसका पेट नहीं भर रहा है, try and start breastfeeding her, because इससे better और कुछ नहीं है. I kept feeding her, and alhamdulillah till date, like अभी तक she is still taking my feeds, कभी कभी बीच में. And I'm really lucky that I could actually feed my child. But टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत लोगों को सुना है ये चीज़ें बोलते हुए, एंड बहुत लोगों को मैंने प्रेशराइज करते हुए देखा है टू दी मदर, कि बहुत सारी मदर्स ऐसी होती है हु एक्चुअली कैन नॉट फीड देयर बेबी बिकॉज उनके प्रोडक्शन होता ही नहीं है, एंड दे एक्चुअली कांट.
So I really want you guys to understand this. If you are a mother who is already feeding or you're not able to feed your baby, it is completely normal. This is just our body. Like किसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है. Like I actually started exclusively feeding my baby since she was 2 months. उससे पहले तो मैं कर ही नहीं पाई. Like कर पाई हूँ. Like she used to take जैसे उसके अगर like पकड़ लो अगर 12 times उसको feed किया जाता था तो 6 times I used to give her the formula and 6 times I used to feed her from myself. But मुझे ऐसा लगता था कि उसका पेट नहीं भरता है, and that is actually the wrong conception. Every mother thinks like if you are even feeding your child every 1 hour, you can do that. Like if your milk production is there, but जिन लोग को नहीं है, please I request उन लोग को pressurize कभी नहीं करो, because this is one of the thing you actually can go into depression, and postpartum depression is real. So postpartum depression को लेके मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाली हूँ. Yes, I was hit by postpartum depression and you can ask me if you want to watch that video too. But in this video actually I wanted to keep it till here. So this is the thing that every person should understand, and आप please make sure if you are a husband who is watching this video and you need to support your wife, please do it, because एक बहुत ही बड़े change से एक माँ गुजरती है, एक औरत गुजरती है. Like 7 layers of their body is getting cut for getting out a baby. A new life is it's a massive operation. So it is one of the massive operations. So please, like whoever is listening to me, whoever is watching this video, please understand and support your partner, especially in this time. She really needs you. If she is pregnant, if she is planning to, or if she is already a mother, please take care of her. And one more thing I want to tell you guys, कि please कभी ना predict मत किया करो कि लड़का है या लड़की है. To be very honest, मैं किसी ज्योतिष को भी नहीं मानती हूँ. The persons who actually predict, because if they could predict, they could become something in their own life. And हम लोग अनजाने बहुत लोगों को predict करते हैं. And I used to be this person before I got pregnant कि हाँ शायद इसको ना बेटी होने वाला है, शायद इसका ना बेटा होने वाला है. But you can't actually tell that, and you are actually telling that thing to a person who is expecting from 9 long months. 9 months is not a very small time. It's of a year is going in 9 months. तो एक औरत who is pregnant, who is expecting, and who is not allowed to go for the tests in which the like gender gets revealed, उस इंसान को एक्चुअली आप दिमाग में डाले ही जा रहे हो कि आपकी बेटी होने वाली है या फिर आपको बेटा होने वाला है. लाइक फॉर मी बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि तुमको बेटी होने वाली है, बेटी होने वाली है, बेटी होने वाली है. सी, आई वॉन्टेड अ गर्ल, आई वॉन्टेड अ डॉटर, माई हस्बैंड वॉन्टेड अ डॉटर, बट आई रियली डोंट वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम अनदर पर्सन कि मुझे क्या होने वाला है. लेट द न्यूज़ कम ऑन द डे ऑफ माई बेबी इज़ बॉर्न, नॉट बिफोर दैट, क्योंकि आपके प्रेडिक्शन से वो लड़का या लड़की नहीं होंगी. और इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू एवरीबडी हु इज़ कंसीव्ड, हु इज़ प्रेग्नेंट, हु इज़ ऑलरेडी प्लानिंग टू कंसीव. प्लीज़ शेयर दिस एंड टेल एवरीबडी कि ये चीज़ प्लीज़ ना बोले, क्योंकि ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करता है टू दी मदर. कोई मुझे कह रहा है कि आपको बेटी होने वाली है, हाँ ठीक है सुन लिया. कोई और मुझे कह रहा है कि आपको बेटा होने वाला है, हाँ सुन लिया. फिर कोई बोलता है, फिर ना मदर स्टार्ट्स थिंकिंग, हाँ अगर बेटी हुई तो, हाँ अगर बेटा हुआ तो. क्यों ही बोलना, क्यों ही सोचना. यू आर actually creating a human inside your body. Why you really need to know the gender before that baby is all like even born? You don't really need to know. So this is a small message. Please, कोई भी pregnant है, stop saying this, because this is very very irritating. Let that person come to know when she will deliver her child. And अगर आपने gender reveal कराने के लिए कोई test किया है तो that is absolutely fine. If it is there in your country, you can definitely do it.
but personally I don't actually support this. If you have watched my baby shower, I said that it's not even allowed in India, and I don't even support, because I wanted to get surprised, and I got a surprise and I was very happy seeing my baby girl. So yes, her name is Sajda, and she is a little bit grown from the time she was born, and now iske baad you'll keep seeing all her new videos, all her vlogs which is coming up, and even she has got her own Instagram, which obviously I operate. So you can follow her on her Instagram, it's there in the description box, and her Instagram name is flashing somewhere right here, and that is Sajda Ahmed 7. And yeah, that's it for this video. I hope you all enjoyed this pregnancy to delivery story plus post delivery story, and if you enjoyed, please give me a thumbs up and even subscribe to my channel. If you want to watch more this kind of videos in where I'm sitting down and talking to you all, like हम लोग का शादी का अगर कुछ जानना है, or even if you want to know the postpartum, then you can definitely ask me and I will be happy to do a video. I know this is a very lengthy and long video, and I always suggest कि आप लोग हमेशा कुछ snacks grab कर लो so that you can eat and watch this video. So yeah, that's it. We'll see you in my next one. Till then, take care. Love you all. Mwah. Bye.